Good afternoon, students. Today we will be discussing about the respiratory system. So, respiratory system means what? When you breathe, the way how you breathe. It's not it. So it means that. So let us now discuss what do you mean by that. So in the human respiratory system, what will you find? You'll find that humans, they take in oxygen and they breathe out carbon dioxide. That is, mainly two gases takes place. That is oxygen and carbon dioxide. They will take in oxygen and they will expel out carbon dioxide. Do you understand? And in the respiratory system, what will you find? You will find that the lungs, they play an important role for for all these things. That is exchange of gas when you breathe in and when you breathe out. So it, the lungs mainly take part in that thing. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? जब हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है? यहाँ पे दो गैसेस एक्सचेंज होता है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस मतलब एक्सचेंज होता है। समझ में आया? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन्स सबसे ज्यादा फंक्शन करता है? लंग्स। सबसे ज्यादा ये लंग्स फंक्शन करता है। ठीक है। और ये जो लंग्स, इसके मदद की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। If you understand this part, everyone, सबको समझ में आया ये पार्ट? Yes, ma'am. Okay. Next is you have got two types of respiration, that is internal as well as external respiration. So हम लोग को respiration में दो types मिलेगा, एक है internal respiration और दूसरा है external respiration. So let us see now one by one. So in the external respiration, that is breathing out, what you will find? You will find that there is usually exchange of gas occurs here. That is in between what? In between your lungs and your blood. In between your lungs and your blood, there will be exchange. And here what usually happens? The chest, it usually contracts. Chest contracts means what? Means your chest, it will become smaller in size. It will compress. It will be compressed. Compressed means it will become small in size. And your diaphragm, this is your diaphragm. Understand? This is your diaphragm, and your diaphragm, what will happen to your diaphragm? Your diaphragm, it will relax. It will relax. So this thing happens in the external respiration. That is breathing out. तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे क्या होगा? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा। किन दोनों के बीच में होगा? ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे क्या होगा? चेस्ट कंट्रैक्ट होगा, मतलब ये चेस्ट जो है, छाती है, ये मतलब छोटा हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा। और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम, ये रिलैक्स हो जाएगा। समझ में आया? ये रिलैक्स हो जाएगा। Next is internal respiration, that is breathing in. So what happens in the internal respiration? That means here exchange of gas happens in between what? In between your blood and as well as your cells, in between blood and your cells. And in this internal respiration, what happens? Your chest, this is your chest, it will expand. Expand means it will become bigger in size. And what will happen? The diaphragm, it will contract, means it will compress, it will become smaller in size. तो नेक्स्ट क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? ये जो चेस्ट है, छाती है, ये एक्सपांड होगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। और ये जो डायफ्राम है, ये कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाएगा। और इन दोनों के मतलब ये इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा। किन दोनों के बीच में होगा? ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज होगा। If you understand everyone?
Did you understand? Did you understand or not? Yes, ma'am, I understand. Okay. Next is upper respiratory tract. Means upper side. Upper side, what you will find. This is the lower side. So all this system, it comes under the respiratory system. All this. And the upper side is this and the lower side is this. So it is divided into two parts. One is upper, one is lower. So now we will be discussing about the upper respiratory tract. ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक है दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब नीचे में जो है अपर मतलब ऊपर। और okay, now let's see upper respiratory tract. So in the upper respiratory tract, what are the parts that you will find? First is you will find nose and your mouth. So the nose and your mouth, they play an important role in taking in air, taking in the air, and it goes through the what? Through the mouth, and afterwards it goes to the nostrils. This is your nostrils. So in this way, the air means it helps the air to enter inside it. So it will go where? It will go inside the lungs. So this mouth and the nose, they play an important part to take in the air so that it will proceed, so that they will, so that they will function properly. तो यहाँ पे क्या होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये माउथ और जो नोज है ये मतलब पहला स्टेप है। ठीक है, ये पहला स्टेप है ताकि हवा अंदर घुस जाए ताकि तुम लोग सांस अच्छे से ले पाओ। तो क्या होगा यहाँ पे ये माउथ है और ये नोज है। यहाँ पे इसके अंदर हवा घुस जाएगा तो हवा अंदर घुसने के बाद कहाँ पे चला जाएगा? नॉस्ट्रल्स पे चला जाएगा। ठीक है, नॉस्ट्रल्स पे चला जाएगा और मतलब लंग्स में जाने के लिए ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट इज your nasal cavity, this one, or else it is also known as nasal passage. So here what happens, same thing, the air will come from the nostrils and it will enter into the nasal passage or nasal cavity so that it will go to the lungs, so that it will be easy for you to breathe in. तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट नेजल कैविटी, नोज और माउथ में हवा घुसने के बाद कहाँ पे चला जाएगा? कहाँ पे चला जाएगा? नेजल कैविटी या नेजल पैसेज पे चला जाएगा। ठीक है, ताकि हवा अंदर घुस जाए। समझ में आया? Did you understand the nasal cavity? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Next is sinuses. Sinuses. So these are the sinuses that you will find in the upper respiratory tract. Frontal sinus, ethmoid sinus. Next is maxillary sinus. You'll find both sides, near your nose as well as your chin. This one, cheek. I mean, cheek. Maxillary sinus. And next is sphenoid sinus. So these are the name of the sinus that you will find in the upper respiratory tract. तो नेक्स्ट क्या होगा? साइनसेस, जो मतलब ऊपर में मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये जो सारे मतलब उन लोगों का नाम क्या है? पहला फ्रंटल साइनस, ये दोनों मतलब आईब्रोज के मतलब पास ही होगा। नेक्स्ट क्या होगा? नाक के पास ही होगा, उसको बोलते हैं इथमॉइड साइनस। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिलरी साइनस, जो नाक के नीचे में मिलेगा। मैक्सिलरी नाक के नीचे में भी मिलेगा और हमारे होठ पे भी मिलेगा, मतलब चेहरे पे। ठीक है, और स्फिनोइड साइनस यहाँ पे। So these are the sinus that you will find in the upper respiratory tract. So what do they do? What is the function of the sinus? They helps. Okay, there is a hole in between. I mean, there is a hole in between the bones in the head that is in the sinus.
So what happens here when the air enters inside this, that is from the outside environment, that is yeah, from the outside world. So as the air enters inside the hole, what will happen? They will make the temperature humid. I mean, they will make the temperature, or they will make the water vapor, which you are inhaling, in such a way that it will be tolerable for you. It will be tolerable for your body, so that your body will be able to tolerate the temperature, whatever you are taking in, so that it will be tolerable for you. Do you understand? तो यहाँ पे क्या होगा, जब हवा अंदर घुस जाएगा इसके अंदर, मतलब फ्रंटल साइनस, मतलब जो भी साइनस पे अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे छेद है, ठीक है, होलो मतलब छेद है। तो ये छेद के अंदर जब घुस जाएगा ये जो हवा, ये मतलब टेम्परेचर ह्यूमिड करने के लिए मदद करती है। मतलब ह्यूमिड मतलब हम लोग जो जब सांस लेते हैं, जो हवा है, मतलब जो वाटर वेपर वगैरह, हवा, वो सब टॉलरेट मतलब करने के लिए, ठीक है, सहन कर पाने के लिए हम लोग का मदद करते हैं, ताकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना हो। ठीक है, do you understand everyone about sinus? Yes, ma'am. Okay, next is throat or pharynx. So this one, this is pharynx or throat, this one. So what happens here? Same thing. When the air will enter into the mouth, nostrils, nasal passage, then sinus, and afterwards it will go to where? It will go to the pharynx. The air will go through the pharynx or throat, so that it will go to the destination, that is the lungs. तो फेरिंग्स भी सेम ही है, फेरिंग्स नहीं तो फिर थ्रोट भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या होगा, माउथ, नोज, नेजल कैविटी और ये जो साइनस है, जब हवा अंदर घुसने के बाद क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा फेरिंग्स, मतलब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पैसेज फेरिंग्स नहीं तो फिर थ्रोट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हवा अंदर घुस जाएगा ताकि यहाँ का मेन डेस्टिनेशन तक चला जाए। वहाँ पे है मेन डेस्टिनेशन लंग्स है कि नहीं, तो लंग्स में जा पाने के लिए अ, ये रास्ता भी मतलब उन लोग को पार करना पड़ेगा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज larynx. This is the larynx. It is also known as voice box. Larynx, it is also known as voice box. And in this larynx, what happens in the digestive system? You have got, na? As soon as the food enters, it will go from the mouth. It will help you in chewing. Is that it? Afterwards, it will go where? The esophagus. It's not. It won't go to the larynx. So both the larynx and the esophagus, they will play a different role. So don't get confused. Don't think that when you will have food, it will enter to the larynx. No, it's not like that. They will do their own work. That is the larynx and the esophagus. It's completely different. You understand? So the larynx or the voice box, they the same thing. So after the throat or the pharynx, the air will enters inside the larynx. Understand? The air, it will enters inside the larynx, and afterwards what will happen? The larynx, they will stay away. They will avoid the the food and the drink, whatever you take in from the lungs. Means what? They will do their own work, the esophagus and the larynx. So don't get confused in that. तो नेक्स्ट क्या है, थ्रोट के बाद या फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, उसको वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं। तुम लोग को याद है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग खाना खाते हैं डायरेक्टली इसोफेगस, मतलब चबाने के बाद कहाँ पे चला जाता है, अगर गिलने से, swallow करने से कहाँ पे चला जाएगा, लैरिंग्स, सॉरी, इसोफेगस में चला जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम खुद करेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम खुद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको,
ये मतलब हवा अंदर घुसने के लिए ये लैरिंग्स में मदद करती है, मतलब ये नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट रास्ता है ये, ताकि हवा अंदर घुस जाए और अपना फंक्शन करे लंग्स। Did you understand? Yes, ma'am. Okay, so we have completed the upper part. So I hope it's clear everyone. हम लोगों ने upper part मतलब ऊपर वाला जो है upper respiratory tract complete कर लिया। I hope तुम लोग को समझ में आए। Next is the lower respiratory tract. So this is the lower respiratory tract. So in the lower respiratory tract, what will you find? What are the parts? You will find that you have got lungs, then trachea, this is trachea. It is also known as windpipe. Then next is what? Bronchi, this is bronchi. Bronchi you will be getting in both sides of the lungs. You have got two lungs, so they are attached. The bronchi, they are attached with the lungs, this part, the bottom part. The bottom part of the trachea, it is known as the bronchi. And bronchioles. Bronchioles are all these. They are just like branches. All these are bronchioles. And alveoli. Alveoli, they are very small. All this. The end portion, all this. They are very small. So these are the part of the lower respiratory tract. तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या मिलेगा? पहले हम लोग को लंग्स मिलेगा, दो लंग्स, ठीक है, 1 2, दो लंग्स मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाई, ये दोनों लंग्स में मिलेगा, ये दोनों अटैच है, ठीक है। ब्रोंकाई एक दो, ये दोनों अटैच है। ये विंड पाइप मतलब ट्रेकिया के ठीक नीचे में होता है ब्रोंकाई, अटैच है। और नेक्स्ट क्या है? ब्रोंक्यूल्स, ये सब ब्रोंक्यूल्स है, ये सब ब्रांचेस का जैसा जो है उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सबसे एंड पोर्शन में जो है, सबसे लास्ट में जो है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये मतलब बहुत छोटे हैं ये एल्वियोलाई, ठीक है। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड द पार्ट्स? Yes, ma'am. So let us discuss about it, about the lower respiratory tract. So first is trachea. So this is trachea. So the trachea, they are a passage. I mean, they are a way from the throat and your lungs. So this is your throat and this is your lungs. So they are like a passage. I mean, they are like the connecting point in between your throat and your lungs. The trachea. This is trachea. They are also known as windpipe. तो ये ट्रेकिया क्या है? ये ट्रेकिया मतलब कनेक्ट होता है थ्रोट, ये जो थ्रोट है और लंग्स के बीच में कनेक्ट होता है ये दोनों, और ये मतलब पैसेज जैसा है, मतलब रास्ते के जैसा है, जो थ्रोट और लंग्स के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स कहाँ पे है? ये इस पार्ट, the end portion of the trachea, that is the windpipe. It is known as bronchial tubes. So they are attached to each side of the lung. तो ये जो bronchial tubes है, ये मतलब दो lungs के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो lungs है लेकिन एक दो, तो ये जो windpipe है ये दोनों मतलब जुड़ा हुआ है एक साथ। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट lungs, 1 2. So you have got two lungs. So in these two lungs, what will you find? You will find that the lungs, they used to remove oxygen from the air which you breathe in, and afterwards where it will go? It will go into your blood. तो नेक्स्ट क्या है? लंग्स। हम लोग को दो लंग्स मिलेगा, एक दो। तो ये जो लंग्स है क्या करता है? ये मतलब ऑक्सीजन को हटा देता है। कहाँ से हटा देता है? हवा से हटा देता है। और कहाँ पे चला जाता है? ब्लड, खून में चला जाता है। Did you understand this part?
Do you understand this part, everyone? Yes, ma'am. Next is system of respiration. So in the system of respiration, what will you find? You will find that the lungs they play an important role for you to respirate, means to breathe in oxygen and to breathe out carbon dioxide. So who is responsible for this? Your bloodstream. I mean, let me repeat again. Your lungs, they will help in what? They will help you in giving all the oxygen to, I mean, they will go and supply oxygen to where? To your organs as well as your tissues. With the help of what? With the help of your bloodstream. Understand? So with the help of your bloodstream, the lungs, they will help you in doing that. And in this system of respiration, what will you find? You will find that your muscles and as well as your bones, they play an important part in functioning. So in the muscles, what will you find? In the muscles, you'll find that the diaphragm, they will help you in what? They will help you in taking in oxygen and breathing out carbon dioxide. That means what? They will help your lungs to move it. Understand? The diaphragm. The diaphragm it comes under muscle portion, and in bone portion, what will you find? You will find ribs. So the ribs they will help you in what? The rib cage or the ribs. You remember, no? You have got in the bones. So the ribs they help the lungs and your heart to stay in the same place. I mean, so that they can stay in the so that they can stand still. I mean, so that they will remain in the exact place or the exact location. So it helps in that. तो नेक्स्ट क्या है सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन तो सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या मिलेगा ये लंग्स मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करेगा कहाँ पे सप्लाई करेगा हम लोग का बॉडी ऑर्गन्स में और टिश्यूज में भी सप्लाई करेगा तो किसके द्वारा कैसे कैसे सप्लाई करेगा ब्लड स्ट्रीम की मदद से सप्लाई करते हैं तो ये सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोगों को क्या मिलेगा मसल्स और बोन्स मिलेगा तो ये मसल्स और बोन्स एक दोनों तरफ मतलब काम करते हैं तो मसल्स में क्या मिलेगा तुम लोग को मसल्स में डायफ्राम मिलेगा डायफ्राम मतलब मसल्स पे मिलता है और ये जो डायफ्राम है कैसे मदद करते हैं हम लोग का लंग्स जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं सांस बाहर करते हैं लंग्स के मदद की वजह से हम लोग करते हैं है कि नहीं तो ये जो डायफ्राम है ये मदद करते हैं लंग्स को मूव करने के लिए नेक्स्ट क्या है बोन्स बोन्स पार्ट में क्या आएगा रिब्स तो ये रिब्स या बोन्स का मदद की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग का जो हार्ट है और लंग्स है ये मतलब एग्जैक्ट पोजीशन में रखते हैं ठीक है जहां पे था वहां पे ही है मतलब वो लोग नहीं हिलेंगे वो लोग वो लोग ऐसे की तैसे ही रहेंगे ताकि अच्छे से काम करें ठीक है डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन Yes, ma'am. Yes. okay next is system of respiration so in the system of respiration you will find this one also so next is alveoli and bronchioles so in the alveoli and bronchioles, they are the continuation. Understand? They are the continuation of the bronchial tubes. So this is the bronchioles. So this is the bronchioles. This is the alveoli. तो ये जो bronchioles और alveoli है, ये मतलब continuation है bronchial tube का, ठीक है? तो ये पहले हम लोगों को क्या मिलेगा bronchioles मिलेगा उसके बाद alveoli so what will you find here in the bronchioles you will find that they are this one
They are attached with the alveoli. Understand? They are attached with the alveoli. And in this bronchial, you will find that they are small. They are very small. They are like branches. Understand? They are like branches. They are very small. And in this alveoli, you will find that the air, they are tiny air sacs. I mean, they are very small and they are all found together, just like grapes. No? They are all connected with each other. They are like clusters. I mean, they are like grapes which stay together. And what happens here? Exchange of gas occurs here. That is in between who and who? In between carbon dioxide and oxygen. Understand? So it means that. Do you understand everyone? Alveoli, sorry, ये bronchioles क्या है? ये bronchioles branches का जैसा है. ये मतलब ठीक alveoli के पास नहीं है. तो ये bronchioles क्या है? Bronchioles मतलब branches का जैसा है. ये दोनों connected है. Alveoli के साथ connected है. और ये जो alveoli क्या है? ये alveoli छोटा छोटा करके है. ये मतलब अंगूर के जैसा है. ठीक है, ग्रेप्स का जैसा है. ये लोग एक साथ होता है. और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है. कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे एक्सचेंज होता है. ठीक है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so next is capillaries. So this is the capillaries. So in the capillaries, what will you find? The capillaries, they are like what? They are like blood vessels. Understand? The capillaries, they are like blood vessels and they are attached with the alveoli. So these are the alveoli. You remember? No, I said they are just like grapes. They are very small. So they are attached. So they are attached with the alveoli. That is the capillaries. And what happens here? They will I mean, they will also move when there will be exchange of gas. They will also move uh, when there will be exchange of gas. That is in between when oxygen and carbon dioxide they exchange, they will move it. Understand? So next क्या है? Capillaries. So next क्या है? Capillaries. तो capillaries में क्या होगा? ये जो capillaries है, ये blood vessels है. ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा? ये जो alveoli है, मैंने बोला था ना, ये लोग छोटा छोटा है, अंगूर के जैसा है. ये मतलब अटैच है कैपिलरीज के साथ. ठीक है, कैपिलरीज के साथ जुड़ा हुआ है. और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सचेंज होता है गैस, ये लोग भी मतलब मूव होते हैं. मतलब ये लोग भी हिलते हैं, एक्टिव होते हैं ये लोग. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay, next is lungs. So the lungs, you will find two. We have got two lungs. So the right side of your lungs, they have got three lobes. There is superior lobe, middle lobe, and the inferior lobe. So these are the three lobes that you will find in the lungs. And next is the left lobe. This is your left lobe. So in the left lobe, you will find that you have got two lobes. There is the superior lobe and the inferior lobe. So in the left lung, you have got two lobes. Please don't forget, the right side of your lung, it has got three lobes: superior lobe, middle lobe, and inferior lobe. And the left side of your lung, you have got two lobes, that is superior lobe and the inferior lobe. Will you remember? Yes? Yes, ma'am. Okay. And in this superior lobe, you will find that the superior lobe, they are separated by the horizontal fissure. Horizontal fissure.
And this middle lobe and the inferior lobe, they are separated by the oblique fissure. This one, fissure. This one. And in the left lobe, what will you find? I mean, in the left lung, what will you find? You will find that the superior lobe and the inferior lobe, they are divided by the oblique fissure. तो हम लोगों को क्या मिलेगा? दो लंग्स मिलेगा, एक है राइट लंग और लेफ्ट लंग। और राइट लंग में हम लोग को तीन लोब्स मिलेगा, एक है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लंग में हम लोगों को क्या मिलेगा? सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। तो ये जो राइट लंग में है, सुपीरियर लोब और मिडिल लोब के बीच में सेपरेट होगा। तो ये जो सेपरेशन है उसको क्या बोलेगा? हॉराइजॉन्टल फिशर। और ये जो मिडिल लोब फिर से मतलब सेपरेट होगा, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। और ये जो सेपरेशन पोर्शन इसको क्या बोलेगा? ऑब्लिक फिशर। और लेफ्ट लंग में जो है हम लोग को दो लोब्स मिलेगा, सुपीरियर और इंफीरियर लोब। तो ये सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब का जो सेपरेशन है उसको क्या बोलेगा? ऑब्लिक फिशर। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन टिल हियर? Yes? Yes, ma'am. Okay. Okay, then we will discuss till here for today's class. In the next class, we will discuss pleura, cilia, epiglottis, larynx, all this we will discuss. So for today, we will end here. Ma'am.